Very good morning to all of you. In our last class, we started chapter number 14, that is movement of ocean water of our geography part first book, Fundamentals of Physical Geography. The name of the chapter is Movements of Ocean Water. So as we discussed that ocean water is dynamic and it moves from one place to another one. It is not static. So two types of movement we studied in our last class. The first one that is horizontal motion in ocean water and the second one that is vertical motion. Horizontal motion, we discussed about the ocean currents and waves. And the example of vertical motion of ocean water is tide. So there's only one difference between ocean currents and waves, that when ocean currents are huge mass of volume of water जो है one place to another place क्या होगा transfer, but in ocean waves या oceanic waves ये जो movement है इतना ह्यूज वाटर का नहीं होता है. Next thing that we discussed about the surf also, that what do you understand by surf? So surf means waves that break on an ocean shoreline, that is surf. We discussed about this figure 14.1, that is motion of waves and water molecules also in our last class. That what do you understand by crest? What do you understand by trough? So crest is the highest point of wave and trough is the lowest point of the wave, we discussed in our last class. Other than this, we also discussed about the wavelength. That wavelength is the horizontal distance between two successive crests. So इस highest point और ये वाला जो highest point जो है two waves के between, उसमें जो ये horizontal distance है, horizontal distance, that is wavelength. And if we are talking about the wave height, that what do you understand by wave height, then you can see wave height is the vertical distance from the bottom of the trough to the top of the crest. तो highest point और lowest point जो है किसी भी wave का, उसके बीच में जो vertical distance है, that is wave height. तो ये आपको हमने क्लियर किया था लास्ट क्लास के अंदर फिगर 14.1. So these are some of the characteristics of wave that we already discussed, that wave crest and trough, wave height, wave amplitude, wave period, wavelength, wave speed, and wave frequency we discussed in our last class. So today we are going to start our next topic, that is tides. So tides का introductory part already done in our last class, but no problem, उसको हम वापस से एक बार शुरू कर लेंगे. Now look at this one. Yes. So tides are the periodical rise and fall of the sea level. As we already discussed, the tide is the vertical motion of the oceanic water. Tide is the vertical motion of the oceanic water. Then here you can see the periodically rise and fall of the sea level. ऐसा नहीं है tide हर वक्त ही tide आता रहता है. एक पीरियड के बाद एक टाइम पीरियड होता है, एक डेफिनेट टाइम पीरियड होगा. सो यू कैन सी इट कम्स वंस और ट्वाइस अ डे. And what are the reason behind it? What are the forces responsible for the origin of tides? So it comes due to the attraction of the sun and the moon. So as we all know about the gravitational force, so every mass of body having some gravitational force, and gravitational force is the force that attracts any two object with mass. So it always try to pull masses together. तो उसकी वजह से क्या होगा, लैंड सरफेस में तो बल्ज आने से रहा, लेकिन जो ओशियंस में क्या आ जाएगा, ओशियंस में बल्ज मींस वर्टिकल राइज ऑफ वाटर हम कह सकते हैं. एंड दैट बल्ज, एंड एग्जैक्टली अगर हम मीनिंग देखते हैं, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट बल्ज, दैट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बल्ज,
Now you can see that what do you understand by bulge? That bulge is something sticking out from a surface. So the periodically rise and fall of the sea level once or twice a day, mainly due to the attraction of sun and the moon, is called the tide. So tide is the vertical motion of the oceanic water. It comes periodically. It is the rise and fall of the sea level once or twice a day, and the forces which are responsible for it is the attraction of the sun and the moon, and the force that is attraction of the sun and the moon is gravitational force. So ये यहाँ तक ये 3 lines आपको clear होनी चाहिए. The next line, that is movement of water caused by meteorological effects. So all the effects which are related to the atmospheric phenomenon are known as meteorological effect. As we already discussed in our first chapter, हमने discuss किया था that meteorology is a science which deals with the atmospheric phenomenon. The same subject in geography is climatology. We discussed in our chapter number 1 that meteorology is a same subject which is climatology in geography. So meteorology is a science which deals with the atmospheric phenomenon. So why this water movement is caused by meteorological effect? Why this is known as meteorological effect? Because winds and atmospheric pressure changes are the factors of meteorology or the atmospheric factors. And these are called surges. These are called surges. Surges means, what do you understand by surges? Surges means to accelerate forward. आगे की तरफ चलना. That is to accelerate forward. So that movement of water you can see in this picture also. 14.2 maybe 14.1. Look at this 14.1. You can see ये आगे की तरफ जा रहे हैं या नहीं जा रहे. Just like this, it forward, it move forward. That is surges. Surges आपको clear हो रहे. So surges are not regular like tides. The study of tides is very complex. Spatially means over the areas, over the oceans in the earth, and temporally. Temporally here stands for the time. Temporally here stands for the time, and especially here stands for the place. So it has great variation in frequency, magnitude, and height. So if we are studying tides, and tides are very complex, they are not same. First thing, the frequencies are different, the magnitude are different. मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट है, फ्रीक्वेंसी भी इनकी डिफरेंट रहती है, और हाइट भी इनकी डिफरेंट रहता है. डिपेंड्स ऑन द एरिया, डिपेंड्स ऑन द टाइम. Next thing, another factor is centrifugal force. So first we have to clear that what do you understand by centrifugal force? What do you understand by centrifugal force? So centrifugal force is the effect that tend to move an object away from the center of a circle. So कोई भी रोटेटिंग अगर बॉडी है, अगर अर्थ की बात करते हैं और उसका अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात करें, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को सेंटर से दूर करने का जो फोर्स लग रहा है, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. देयर आर टू फोर्सेस, सेंट्रीफ्यूगल एंड सेंट्रीपिटल. सेंट्रीपिटल attracts the object towards the center, and centrifugal tend to move the object away from the center. Centrifugal forces tend to move an object away from the center. Centripetal forces tend to attract an object towards the center. वो तो सेंटर की तरफ खींचता है, और सेंट्रीफ्यूगल सेंटर से बाहर की तरफ मूव करता है. So look at this figure 14.2. The relation between gravitational force and tides are given. You can see the first figure, that is the earth is given, a tidal bulge is given. You can see this tidal bulge and moon and sun on your screen. You can see there is a tidal bulge. Tidal bulge means rise, that is the rise of the oceanic water, a bulge that is sticking out from the surface, from the sea level, from the oceanic surface. There is a rise of the water, and that is due to the gravitational force, that is due to the gravitational force of moon and sun.
Gravitational force of moon and sun. Now look at the second picture. You can see there is a tidal bulge at the opposite side of the moon and sun. कि जो मून एंड सन जहां से फेस कर रहे हैं अर्थ को उसके ऑपोजिट साइड में भी एक टाइडल बल्ज यू कैन सी एंड दैट इज ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. That is due to the centrifugal force, and centrifugal force we already discussed. The centrifugal force tend to move an object from the away from the center. तो ये तो अर्थ का सेंटर है, यहाँ उसने जो ओशियनिक वाटर है उसको क्या कर दिया, अवे कर दिया, किससे, सेंटर से. नाउ टू रिजल्टेंट टाइडल, अब इन दोनों ग्रेविटेशनल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हम क्या कर देंगे, एक साथ अगर देखें. नाउ यू कैन सी देयर आर टू बल्जेस on this side, one bulge, and the other facing side, that is second bulge, and the first one is due to the gravitational force and the second one that is due to the centrifugal force. Now back to the theory. The moon's gravitational pull to a greater extent, the moon gravitational pull to a greater extent and to a lesser extent of sun gravitational pull. Now look at this line. मून का ग्रेविटेशनल पुल ज्यादा लग रहा है और सन का कम लग रहा है. Why so? Because as we all know that moon is somewhat located nearer to the earth comparatively sun. The distance between moon and earth is less than the distance between sun and earth, so the gravitational pull of the moon is higher than the gravitational pull of the sun. Okay, so these both are the major forces for the occurrences of tide, because tide, we already discussed that tide is the vertical movement of the oceanic water, and tide is the periodical rise of the sea level. So the moon's gravitational pull and the sun's gravitational pull are the major causes for the occurrences of tide. Now the second thing, that is another factor, is centrifugal force. Another factor is centrifugal force. Centrifugal force, which is the force that act to counterbalance the gravity. So आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है उस ग्रेविटी का जो फोर्स लग रहा है इसमें उसको काउंटर कर रहा है, और बैक साइड जो है द अर्थ का वो वाला साइड जो मून और सन को फेस नहीं कर रहा है, उस वाले साइड क्या आ रहा है, एक बल्ज आ रहा है, एंड दैट इज ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, द फोर्स दैट टेंड टू मूव एन ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम द सेंटर. Now, on the side of the earth facing the moon, a tidal bulge occurs, while on the opposite side, though the gravitational attraction of moon is less as it is farther away, the centrifugal force causes tidal bulge on the other side. So this side, the tidal bulge is caused by the gravitational pull of moon and sun, and the opposite side, the tidal bulge is caused by the centrifugal force. तो ये आपको क्लियर होना चाहिए. Now again the same thing. तो इसको जब हम कॉपी में करेंगे या नोट्स बनाते हैं, in that case first you have to define that what do you understand by tide, the definition. After that the forces, सीधा आप फोर्स पे आ जाएंगे भाई, these are the forces responsible for the occurrences of tide. So the tide generating forces, the force that generate tides are tide generating forces, is the difference between these two forces, and the two forces are gravitational attraction of moon and the centrifugal force. On the surface of the earth nearest the moon, pull or the attractive force of the moon is greater than the centrifugal force, and so there is a net force causing a bulge towards the moon. On opposite side of the earth, the attractive force is less, it is farther away from the moon, the centrifugal force is dominant. Again look at this figure 14.2. You can see the first one, that is
the gravitational force exerted by the moon on the surface of the earth you can see. तो जो सरफेस मून के पास में है या जो साइड मून को फेस कर रही है वहां ग्रेविटेशनल पुल क्या है, ज्यादा है। तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बजाय कौन सा फोर्स ज्यादा डोमिनेट करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून। बट ऑन द अपोजिट साइड, अब अपोजिट साइड मून से क्या रह गया है, फार्दर रह गया है, वहां पे कौन सा फोर्स डोमिनेट करेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वहां पे डोमिनेट करेगा। सो हेंस देयर इज अ नेट फोर्स अवे फ्रॉम द मून, इट क्रिएट्स द सेकंड बल्ज अवे फ्रॉम द मून। तो द सेकंड बल्ज दैट इज अवे फ्रॉम द मून इज कॉज्ड बाय द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, and the first bulge that is caused by the moon gravitational pull on the side facing the moon is due to the gravitational force. So on the surface of the earth, the horizontal tide generating forces are more important than the vertical forces in generating the tidal bulges. Now the tidal bulges on wide continental shelves have greater height. Okay, students, we discussed about some of the features of the oceanic relief features. जैसे देखिए हमारी अर्थ की सरफेस पे, हमारी लैंड सरफेस पे जैसे प्लेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, माउंटेन्स हैं, वैसे ही ओशियंस के अंदर भी क्या है, स्लोप्स हैं, प्लेन्स हैं, माउंटेन्स भी हैं और रिजेस भी है। रिजेस मींस स्मॉल माउंटेन्स, हिल्स, ठीक है, ये भी है जो आपकी कहाँ है, उस पानी के अंदर सबमर्ज्ड है, दैट इज सबमर्ज्ड अंडर वाटर। तो उन्हीं के अंदर जहां पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स ज्यादा होगी, जिसकी हाइट ज्यादा होगी, किसकी, द टाइड बल्जेस ऑन वाइड कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स हैव ग्रेटर हाइट, जहां पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स कहते होंगे वाइड होंगे। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स क्या होते हैं, कॉन्टिनेंट जैसे ही कोस्टल एरिया है और जैसे ही ओशियंस जो है स्टार्ट होते हैं, जहां से वो जो कोस्ट लाइन है, तो कोस्ट लाइन के जस्ट पास में जो लैंड सरफेस दैट इज सबमर्ज्ड अंडर वाटर, उसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्व्स। तो ये पूरा एक सीक्वेंस है, कॉन्टिनेंटल शेल्व्स, फिर कॉन्टिनेंटल स्लोप्स, फिर डीप सी प्लेन्स, ये एक प्रकार की सीक्वेंस है। जो जहां पे कॉन्टिनेंटल शेल्व्स क्या होंगे, थोड़े वाइड होंगे, वहां पे टाइडल बल्जेस की हाइट कैसी होगी, ज्यादा होगी। When tidal bulges hit the mid-oceanic islands, they become low because it obstructs them. तो ऐसे टाइडल बल्जेस जो मिड ओशियनिक आइलैंड से टकराएंगे तो उनकी हाइट क्या हो जाएगी, कम। द शेप ऑफ बेस एंड एस्चुरीज, what do you mean by estuaries, because this is I think a new word for you. So what do you mean by estuaries? Estuary means the coastal water body where ocean tides and river water merge. तो ऐसी ocean coastal water bodies जहां पे आपके ओशियन टाइड्स और रिवर वाटर दोनों क्या हो रहे हो, merge हो रहे हो. So the shape of bays and estuaries along the coastline can also magnifying the intensity of tide. So these discussion is the effect, आपके टाइड्स को कौन कौन अफेक्ट कर रहा है उसके बारे में ये क्या है, डिस्कशन है. सो एस्चुअरीज आर द कोस्टल वाटर बॉडीज वेयर ओशियन टाइड्स एंड रिवर वाटर merges. So tidal bulges, if we are talking about the tidal bulges, so tidal bulges height is great where the continental shelves are wide. The second thing that the shape of bays and estuaries to affect the intensity and magnitude of the tides. Like funnel shaped bays greatly change tidal magnitude. When the tide is channeled between island or into bay and estuaries, they are called as tidal currents. क्योंकि जैसे ही वो कोई खाड़ी, बे, एस्चुअरीज के अंदर आ जाएंगे तो वो राइज एंड फॉल ऑफ द वाटर जो है उसको क्या हो जाएगा, जो चैनल है उसका क्या हो जाएगा, थोड़ा सा वाइड नहीं रह के क्या हो जाएगा, वो जो वे है, वे की क्या हो जाएगी, चौड़ाई जो है वो क्या हो जाएगी, कम. तो ऐसा वो किस तरह से दिखेगा फिर हमें करंट के टाइम. सो दैट इज नोन एज टाइडल करंट, क्योंकि वो एक चैनल के अंदर चलने लग जाएगा टाइड. द टाइड इज फ्लोइंग इन अ चैनल बिटवीन द आइलैंड एंड द इनटू बे और एस्चुअरीज. सो
दिस इज टाइडल करंट। और हम देखिए पढ़ते भी हैं टाइडल एनर्जी, हम जो पढ़ते हैं, अगर आपको ध्यान हो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज के अंदर हम जो टाइडल एनर्जी पढ़ते हैं कि हाँ एक टरबाइन रोटेट होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, तो ये करंट्स क्या करते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। Now the next thing that is about the types of tide. You can see one box is also given, that is tides of Bay of Fundy, that is in Canada, and here the highest tide in the world occur. Here the highest tide in the world occur in the Bay of Fundy in Nova Scotia, Canada. And now you can see the height, that is the tidal bulge. You can see it is 15 to 16 meter. So this is the example of the highest tide in the world. Now let's discuss about the types of tides. Types of tides. So tides, as we already discussed, the magnitude, intensity of the tides are affected, are not the same. So tides vary in their frequency, they are vary in direction and movement from one place to another one, and also from time to time. So tide may be grouped into various types based on their frequency of occurrence in one day or 24 hours or based on their height. तो बहुत सारे वेज हैं जिसके अकॉर्डिंग हमने किया द फर्स्ट on the basis of frequencies, the tide are classified into three types. The first one, that is semi-diurnal, the second one that is diurnal, and the third one that is mixed tide. So on the basis of frequency, tides are classified into three. The first one that is semi-diurnal, the second one that is diurnal, and the third one that is mixed tides. So semi-diurnal tides, the most common tidal pattern featuring two high tide or two low tides each day. So as its name indicating, अगर एक दिन के अंदर दो high tide आते हैं and दो low tide आते हैं, as we discussed in the definition. हमने definition में क्या discuss किया था? What did we discuss? That tide is the rise and fall of the oceanic water, rise and fall of the oceanic water. तो जहां पे rise है that is high tide, and जहां पे fall है that is low tide. The rise is the high tide and fall that is low tide. So semi-diurnal tide, as its name indicating, that two high tides and two low tides each day, and that is semi-diurnal tide. So the successive high or low tides are approximately of the same height. तो जैसे जैसे टाइड के बाद में जो नेक्स्ट भी बन रहा है उसकी भी हाइट क्या रहती है? सेम रहती है. Now the next one, that is diurnal tide, as its name indicating, one high tide, one low tide during each day. One high tide and one low tide. तो diurnal tide किसे बोलेंगे? जहां पे एक दिन में एक हाई टाइड आ रहा है, एक पूरा राइज हो रहा है और एक पूरा फॉल हो रहा है. That is one high tide and one low tide. The next one, that is mixed tides. Because as we discussed in semi-diurnal and diurnal, that the height of the tides are approximately same. The heights of the high and low tides are approximately same in semi-diurnal and diurnal, but in mixed tides there are variation in the heights. That's why these are known as mixed tides, and they are generally occurred in the west coast of North America and on many islands on the Pacific Ocean. So Pacific Ocean के बहुत सारे islands के पास में, and west coast of North America, that is also facing the Pacific Ocean. West coast की अगर बात करें तो North America continent की east coast की तरफ तो Atlantic Ocean है, and on the west coast there is Pacific Ocean. So mixed tides are generally occurred in the Pacific Ocean near the west coast of North America and on many islands of the Pacific Ocean. So why these are known as mixed tides? Because in mixed tides there is a variation in the heights of the high tide and low tide की heights में क्या है? Variation है. That's why. So that is the reason that these are known as mixed tide. Now the next classification, we discussed
first classification of the tide on the basis of frequency, and there are three. The first one that is semi-diurnal, the second one that is diurnal, and the third one that is mixed tide. The next classification is based on the positions. As we all know that Earth, Sun and Moon are not static in position. These all are dynamic. The Earth is rotating as well as revolving around the Sun, and Moon is the natural satellite of the Earth. It also revolve around the Earth. So as we all know, there are different positions of the Sun and Moon and the Earth on different time during a year. So the second classification of the tides are based on these positions of the Sun, Moon and the Earth. Now you can see the height of rising water. The height of the rising water, the rise of the water, that here means the high tide, and fall means the low tide. तो ये तो आपका clear होना चाहिए. What do you understand by high tide? High tide means rise of water. What do you understand by low tide? That is means that is the fall of the water. So the height of the rising water, high tide, varies appreciably depending upon the position of the sun and moon with respect to the earth. देखिए इसको ध्यान से थोड़ा सा समझिए. अगर ग्रेविटेशनल पुल ज्यादा लगेगा तो हाइट भी क्या होगी, ज्यादा होगी. हाई टाइड की हाइट क्या होगी, ज्यादा होगी. और ग्रेविटेशनल पुल कम लगेगा तो हाइट क्या होगी, कम होगी. तो ये ज्यादा और कम कब होगा, तो एज वी ऑल नो कि अपने अर्थ जो है उससे सन और मून ईयर के ड्यूरिंग एक पर्टिकुलर डेट को बिल्कुल नजदीक होते हैं. वो मिनिमम डिस्टेंस होता है, उनका सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होता है इन बिटवीन अर्थ एंड मून और अर्थ एंड सन. और एक जो पर्टिकुलर डेट ईयर के अंदर वो भी आती है जिसके अंदर दे आर फारदेस्ट फ्रॉम द अर्थ. सन एंड मून आर द फारदेस्ट फ्रॉम द अर्थ, एंड there's on one date in the year then they are nearest to the earth. तो जब वो बिल्कुल नियर होंगे तो हाइट क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल क्या लग रहा है, ज्यादा. और जब वो फारदेस्ट होंगे तो उस समय कंपैरेटिवली ग्रेविटेशनल पुल क्या लग रहा है, कम लग रहा है. तो ये रीजन इसके लिए क्या रहता है, रिस्पॉन्सिबल. तो अब जिसने ये सुना है तो ये आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा. सो ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन ऑफ सन, मून एंड द अर्थ, the tides are classified into spring tide and neap tides. Spring tides and the neap tide जो है आपका, ये दो क्लासिफिकेशन इसके अंदर आता है. So let's start the discussion of spring tide. And what do you understand by spring tide? So spring tides, the position of the both the sun and the moon in relation to the earth has direct bearing on tide height. And when the sun, the moon and the earth are in straight line, look at this figure. Look at this figure 14.2. You can see the earth, moon and sun. These three are in straight line. ये तीनों ही क्या है, एक straight line में है. And that is known as spring tide, when the sun, the moon and the earth are in a straight line. The height of the tide will be higher. क्यों है height of the tide will be higher? Because you can see अर्थ पे जो है मून और सन दोनों का ही ग्रेविटेशनल फोर्स क्या लग रहा है, एक ही तरफ से एक्सर्ट हो रहा है. तो हाइट भी क्या होगी, टाइडल बल्ज की ज्यादा होगी. So this is the spring tide when the sun, the moon and the earth are in straight line, and the height of the tide is higher, and this is known as spring tide. How many times it occurs in a month? So it occurs twice a month. एक तो आपका आता है फुल मून पीरियड, एक आपका आता है न्यू मून पीरियड. तो स्प्रिंग टाइड्स अकर्स ट्वाइस अ मंथ, वन ऑन द फुल मून. फुल मून मींस हियर मींस फुल मून हम क्या बोलेंगे, पूर्णिमा के दिन, और न्यू मून दैट इज अमावस्या के दिन. तो इन दो दिन जो टाइड आता है दैट इज स्प्रिंग टाइड. The tide on the full moon and the new moon are spring tides. The height of the tide is high due to the position of the sun and moon in the straight line to the earth.
तो दैट इज स्प्रिंग टाइड। ये आपको क्लियर होना चाहिए। The next one that is neap tides. Next one that is neap tide. So neap tide, let's discuss about the neap tide. So neap tides occur when the sun and the moon are at right angle to each other. राइट एंगल टू ईच अदर। और अब आप लेट्स थिंक अबाउट इट, जब सन मून दोनों की पोजीशन राइट एंगल होगी अर्थ से, तो एक बात बताइए, सन भी अपना ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्ट कर रहा है, मून भी अपना ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्ट करेगा, तो दोनों का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो काउंट्रैक्ट करेगा। दोनों का क्या करेगा? काउंट्रैक्ट करेगा, एक दूसरे को डिस्टर्ब करेगा। तो अब यहाँ पे जो टाइड बनेगा उसकी हाइट ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि वो फोर्स जो है वो क्या हो गया है, दोनों बाइफरकेट हो गया है, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो क्या हो गई है, लेस हो गई है, कम हो गई है। सो द सन एंड द मून आर एट राइट एंगल टू ईच अदर, नीप टाइड्स अकर, एंड इन दिस द सन एंड द मून टेंड टू काउंटरैक्ट वन अनदर। तो ये क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा। और ये कब आता है? सो देयर इज अ 7 डे इंटरवल बिटवीन स्प्रिंग टाइड एंड नीप टाइड। तो ये आपका 7 डे इंटरवल के बाद, 7 दिन बाद में ये आ गया, फिर आपका स्प्रिंग टाइड आ गया। तो लगभग आप मान लीजिए कि मिडल ऑफ आफ्टर 7 डेज के बाद नीप टाइड, देन स्प्रिंग टाइड, देन उसके बाद 7 डेज बाद में नीप टाइड, देन स्प्रिंग टाइड। तो ये आपका होता है। अब हम बात करते हैं सन एंड मून की पोजीशन के हिसाब से। तो अर्थ और उसके डिस्टेंस है उसके अकॉर्डिंग, उनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग जो बनते हैं। सो यू कैन सी वंस इन अ मंथ व्हेन द मून orbit is closest to the earth, when the moon's orbit is closest to the earth. So students, now listen to me that यहाँ पे देखिए, अर्थ और मून जब बिल्कुल क्लोज होंगे, क्लोज कब होंगे? तो मंथ में एक दिन जो है ऐसा आता है जिसके अंदर ये बिल्कुल क्या होते हैं, ऐसी पोजीशन में होते हैं जब वो एक दूसरे से सबसे कम डिस्टेंस पे होते हैं, फिर उससे क्लोज फिर नहीं आते, फिर वापस दूर चले जाते हैं। तो उस वक्त अनयूजुअली एक हाई एंड लो टाइड अकर होता है। सो उस पोजीशन को वैसे बोलते हैं पेरिगी। The position is perigee. So don't get confused between perigee and perihelion. When the earth is closest to the sun, the position is perihelion, and when the earth is closest to the moon, that is perigee. When the earth is farthest from the moon, that is apogee, and the earth is farthest from the sun, that is aphelion. So ये चार positions, you must remember these four position. So once in a month, when the moon's orbit is closest to the earth, unusually high and low tide occur. So during this time the tidal range is greater than normal. क्यों रेंज greater होगी? क्योंकि मून अब पास में है, पास में तो ग्रेविटेशनल फोर्स पे क्या हो रहा है, ज्यादा एक्सर्ट हो रहा है। So 2 weeks later, when the moon is farthest from the earth, the moon's gravitational force is limited and the tidal range is less than their average height. The average height से less क्यों है? Because the position of the moon is farthest from the earth. तो farthest होगा तो gravitational force क्या लग रहा है अब? कम। Now the next one, that is when the earth is closest to the sun, and that position is perihelion, and the earth is closest from the sun, that is aphelion. farthest होगा तो aphelion है, closest होगा sun से तो perihelion है। तो 3rd जनवरी को वो सबसे ज्यादा closest होता है। कब होता है? 3rd जनवरी को वो closest होता है। So tidal range are much greater because at that time the sun's gravitational pull is higher on the earth. Now when the earth is farthest from the sun, at that time कौन सा टाइम में होता है? तो 4th जुलाई को farthest होता है। तो tidal range are much less than average because यहाँ पे gravitational pull क्या लग रहा है? आपका gravitational pull जो लग रहा है वो क्या लग रहा है? कम लग रहा है। ओके,